Assalamualaikum. Good morning. We have some short terms remaining in chapter number 2, solid state. We are defining these terms. First of all, we have space lattice or crystal lattice. Available by lattice in a Jimana arrangement. Assigned certified now the three-dimensional arrangement of particles in crystal कंहिं crystal जे अंदर जेका particle जी arrangement that is known as crystal lattice or space lattice. अच्छा वो arrangement जेका हूंदी आहे it may be of atoms, ions or molecules. वो arrangement atoms जीप सके थी, ion जीप सके थी, molecules सके थी. And basis ते some crystals are known as atomic crystals, some are known as ionic crystals, some are known as molecular crystals. अहिड़ी तरह कंहिं बि क्रिस्टल जे अंदरि जेका अरेंजमेंट आहे पार्टिकल जी एटम आयन मॉलिक्यूल जी उन अरेंजमेंट खे चवंदा नालो ॾियूं था स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस. अच्छा अहिड़ियूं पॉइंट्स जाते हुए पार्टिकल अरेंज थियल हूंदा आहिनि दे आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स और लैटाइसिस. जीअं असां हिते लिखियो आहे ठीक आहे हाणे ही स्ट्रक्चर आहे ही पॉइंट आहे ये पॉइंट आहे ही पॉइंट आहे ठीक है अहिड़ी पॉइंट्स आहिनि जाते जाते अरेंजमेंट थियल पार्टिकल जी इनखे चवंदा लैटिस पॉइंट्स या लैटाइसिस. ठीक अहिड़ी तरह चवंदा स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. अच्छा अगर हम कोई ये सब टर्म हुआ मेल्टिंग और फ्यूजन. अच्छा मेल्टिंग पॉइंट के असां पहिरियां डिफाइन करे चुका आहियूं. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? असां यानी चवंदा आहियूं द टेम्परेचर एट व्हिच देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज. मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट आ जाते इक्विलिब्रियम होगा सॉलिड एंड लिक्विड जे विच में. दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. अच्छा मेल्टिंग पॉइंट ते ॿ फैक्टर असर कंदा आहिनि. ठीक है मेल्टिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय नंबर 1 इम्प्योरिटी जेको असां पहिरियां पढ़ियो आहे क्लासिस जे दौरान त कंहिं सब्सटेंस खे इम्प्योर करण सां उन जी मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज थींदी आहे. ड्यू टू इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज डिक्रीजेस. सेकंड हुआ प्रेशर. अच्छा हाणे प्रेशर जो कहिड़ो इफेक्ट कंदो इहो डिपेंड करे थो सॉलिड जी नेचर ते. उनमें ॿ टाइप हूंदा आहिनि ॿ क्लासेस हूंदा आहिनि. नंबर पहिरियों हिकिड़ा अहिड़ा सॉलिड्स हूंदा आहिनि जिनखे मेल्ट करण सां उनजो वॉल्यूम इंक्रीज थींदो आहे. हाणे तकरीबन सभिनी सॉलिड्स में थींदो आहे एक्सेप्शनल कुझु हूंदा आहिनि. हर अहिड़ो सॉलिड जंहिंखे मेल्ट करण सां वॉल्यूम इंक्रीज थिए थो उनजी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज थींदी आहे विथ इंक्रीज इन प्रेशर. सपोज कयो असां के सॉलिड के मेल्ट था कयूं ऐं मेल्ट करण सां उनजो वॉल्यूम वधे थो त वॉल्यूम वधे थो त अहिड़े सॉलिड ते प्रेशर लॻाइण सां उनजी मेल्टिंग पॉइंट बि वधंदी आहे. ॿियो अहिड़ा सॉलिड आहिनि जिनखे मेल्ट करण सां वॉल्यूम डिक्रीज थींदो आहे. हाणे ही ख़ासि तौर ते एक्सेप्ट केस थींदो आहे जीअं आइस आहे. हाणे आइस जो पंहिंजो वॉल्यूम जेको आहे इहो 9% ग्रेटर हूंदो आहे जॾहिं आइस फ्रीज थी ठहंदी आहे लिक्विड मां. यानी लिक्विड खां वाटर खां आइस जो वॉल्यूम 9% वधीक हूंदो आहे. हाणे आइस जॾहिं मेल्ट थींदी उनजो वॉल्यूम 9% डिक्रीज थींदो. त अहिड़ो सॉलिड जंहिंखे मेल्ट करण सां वॉल्यूम डिक्रीज थिए उन ते जेकॾहिं प्रेशर वधाइबो आहे त उनजी मेल्टिंग पॉइंट बि डिक्रीज थींदी आहे. Here melting point also decreases with increase in pressure. Now simple बगा लीजिए हिकिड़ो अहिड़ो सॉलिड जंहिंखे मेल्ट कजे त मेल्ट करण सां उनजो वॉल्यूम वधे थो. वॉल्यूम वधे थो उनजी मेल्टिंग पॉइंट बि वधंदी आहे विथ इंक्रीज इन प्रेशर. अहिड़ो सॉलिड जंहिंखे मेल्ट करण सां उनजो वॉल्यूम घटिजे थो त उन ते प्रेशर वधाइण सां उनजी मेल्टिंग पॉइंट बि घटिजी आहे. ठीक है जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर.
अजेनो टर्म असांखे जो आहे latent heat of fusion. The latent heat छाखे चइबो आहे? It's the amount of heat required to convert 1 gram of solid into liquid. Solid हिकिड़ो ग्राम खणो 1 gram of solid उनखे असां हीट कयूं त मेल्ट थींदो ऐं जेतिरी हीट उन में कंज़्यूम थिए उनखे चइबो आहे latent heat of fusion. Latent means hidden. को हिडन हीट हूंदा छो त जेका एक्स्ट्रा हीट हूंदी आहे that is not shown on thermometer. It is consumed, it is used up by breaking of intermolecular forces in the solid. जेके इन में फोर्स हूंदा आहिनि उहे कंज़्यूम थींदी आहे इन करे असां वटि चवंदा आहियूं हिडन टेम्परेचर हिडन हीट जो latent means hidden. Latent heat of fusion क्या कहना चाहूँ? The amount of heat required to convert 1 gram of solid into liquid. साॻी तरह जेकर तव्हां लिक्विड जो 1 gram खणी उनखे वेपर्स कहंदा latent heat of vaporization. Thanks.